Talk to Sunil Jakhar, who's former president of the Congress party in Punjab and now presently a BJP leader. Sir, how do you see this resignation? What is your first reaction on this? What I can say is that Congress had it coming. It's only Congress High Command or the so-called coterie which is running the Congress now. They refused to read the writing on the wall. It was there for everybody to see. And I personally think, though many would say that I should be now very pleased that all that I had said when I left the party has come true. But no, I'm sad for the sake of democracy and for the sake of I had a very long association, a 3-generation long, 50 years long association with the party. And I think what is happening now, this collapsing of the largest opposition group in the country is collapsing like a house of cards. It's sad for the democracy, but I think they refuse to acknowledge what they were confronted with, what were the shortcomings, or not shortcomings, they were glaring acts of, or even deliberate attempts to undermine the party. It seems like they were on a mission of harakiri, Congress has done. And Jakhar Sahab, if we just count the names, Jyotirudit Scindia, Jitin Prasad, Captain Amarinder Singh, Sunil Jakhar and now Ghulam Nabi Azad. I mean, my question is, what is the reason behind? Why all the big Congress leaders who were the staunch stalwart of the Congress, they are leaving the party? What is the reason behind? Either Rahul Gandhi or Sonia Gandhi? I would say again, like they have rightly, Mr. Azad has pointed out that there's a coterie of sycophants who's running the party now. Mrs. Gandhi's health has, I think, made her not really hands-on kind of a president. And reluctance on part of Rahulji to take charge, take reins in his own hand, has led for these people kind of sycophants, bootlickers who have come up in this hierarchy. When I earlier said what happened transpired in Punjab, that small-minded, petty-minded people have risen to higher levels like CWC members. So obviously that's why I said the Congress had it coming. They didn't realize the caliber of the people who were assisting them or guiding them or who were assigned the role to run the day-to-day affairs of the party. This is not a national party operates. This is not even a household doesn't run unless and until there is a strong head of the household. In Punjabi, as they say, जितना ही बुढ़ा डांग लेके ना बैठा हुए घर भी नहीं चलता साहब. Even you can't run a household also. How do you expect a grand old party to run by these people? So I think they have asked for it. I mean, in the other words, you are just saying that this is the beginning of ending the Congress party? Precisely, this is the beginning of the end. Sunil is not one of the tallest. No, I'm not a tall leader at all. But you can call it, this was the tip of the iceberg. When I said all these things, I think rather than taking note of what my grudges were or what my complaints were, they had sycophants telling him, Sunil bura hai, Sunil ne ye kiya, Sunil ne wo kiya. You can criticize Sunil, you can ridicule Sunil, you can find 110 faults in Sunil. But as you rightly said, what about Scindia Sahab? What about Jitin Prasad? They were the young people who were being groomed, and now they have left. And the people whom they picked up in their wisdom, this so-called national asset, which they created in Punjab, which really ruined the Congress chances of coming to power in Punjab. Where is that asset now? Jakhar Sahab, the resignation, the kind of content that was mentioned in the resignation that have shook the entire politics of the Congress party. And in fact, on the other side, Congress is denying each and every fact that was mentioned by Ghulam Nabi Azad. And G23 leadership is also in contact with Ghulam Nabi Azad. What does that mean? When I say beginning of the end, this is what it means. They are all on the way out. There have been signs, there have been visible outbursts of theirs. They should have been, yeah, even I was, that they should have been handled in a way, at least the authority of the Congress president has been eroded over a period of time by these kind of sycophants. This is what he has written, that the decision is not taken by Rahul Gandhi. But they said decision was taken by this coterie. Decision was not taken by Mrs. Gandhi. There was this coterie taking a decision. I think Mr. Azad is on record saying that we have highest regard for Mrs. Gandhi. We have highest regard for them, but we will not bow down to these kind of petty people. And
time and again they refused or acknowledged their grievances. They were only complaining about these people that put them on the sideline, bring in people who are grounded and who could really run the party, who had a feeling for the party. But no, they have been ignored time and again, and this is what the end result is. They have asked for it. I would say they have really actively, deliberately run the party down. But Jakhar sir, my question is that Rahul Gandhi is trying to spread a message inside the Congress that now it's the time for the young team. I mean, the change is entirely expected inside the Congress party. Senior leadership will guide and youngsters would come up and they will lead the Congress party. But that is actually not happening. I think the reality check is required, sir. They should really get a grip on, like, one needs to be reality. Yes, this is India is demographically the youngest country, one of the youngest country in the world. All the reason for young people to come forth, but where are those young people? Is Mr. Jatin Prasad not young? Is Mr. Jyotirja Sindhya not young enough to check the mental? And not you need experience also. And you are pitting one young man against an established chief minister in Rajasthan. What is that? Rather than sending a strong message, you are pitting your favorite against established leader. This kind of promoting young people does not help. You will see the results in Rajasthan also. You will see the result of this kind of a tussle going on, not settling these issues. Let this fester. This festering wound becomes a terminal illness. This has become a terminal illness now. जाखर साहब, रिपब्लिक भारत के भी हमारे दर्शक हैं, उनके लिए भी दो सवाल हिंदी में कर लेंगे. तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस अपने ख़त्म होने की तादार पर चल चुकी है. सिर्फ पंजाब में नहीं, राजस्थान में नहीं, कई और स्टेटों में नहीं, बहुत सारी जगह पे. यानी कि गुलाम नबी आज़ाद का जो रेजिग्नेशन है वो जम्मू कश्मीर इलेक्शंस को डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा. देखिए, आपको लग रहा है, मेरे को लग रहा है, जैसे वो कहावत है ना, कहना जाने न जाने गोली ना जाने, बाग तो सारा जाने है. सारे हिंदुस्तान को सबको पता है, एक एक बच्चा, क्योंकि हिंदुस्तान में 3 सबसे बड़े फेवरेट टॉपिक्स हैं. एवरीबडी इज़ अ पॉलिटिशियन, एवरीबडी इज़ अ फैन ऑफ क्रिकेट, और सारे के सारे अपने क्रिकेट और बॉलीवुड फिल्म्स, इसके ऊपर सबका है. तो पॉलिटिशियन तो हर एक को दिख रहा है कांग्रेस किस तरफ जा रही है. पर गुल ही ना जाने, उनको शायद ध्यान नहीं है, वो ही उन चापलूसों के घेरे के अंदर बैठे हैं. और शुरू से एक कहावत है, कहते दिल्ली दरबार, आज से नहीं, मुगलों के टाइम से, उससे पहले, कि दिल्ली दरबार हमेशा कान का कच्चा होता है. तो वो उस किस्म के लोग हैं, ये चापलूस लोग वहाँ पे बैठे, गलत इन्फॉर्मेशन, ये जाके ऑल इज़ वेल वाली बात करते हैं साहब. तो ऑल इज़ वेल का नतीजा जो होगा, वो सामने आपके. मतलब जाखर साहब, उन्होंने कहा कि एक चापलूसों की कोठरी है जो जिनके नीचे वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन उनको जो पावर और अथॉरिटी दी है वो तो गांधी फैमिली ने ही दी है ना. वही मैं कह रहा हूँ साहब, डिसीजन नहीं लिया. यही बात गुलाम नबी आज़ाद जी ने अपने लेटर में लिखी है कि ये जो फैसले हैं राहुल गांधी जी नहीं ले रहे, ये फैसले सोनिया जी नहीं ले रहे, ये लोग, चापलूस लोग ले रहे हैं. जो झंडा जिन्होंने फहराया आज 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड के ऊपर उन्होंने झंडा फहराया, वो लोग ले रहे हैं. जबकि सीनियर मोस्ट वहाँ पे आज CWC के मेंबर गुलाम नबी आज़ाद हैं. आज हक उनका बनता था, क्योंकि जब सोनिया जी की तबीयत ख़राब है, इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं, तो नेचुरली जो सीनियर मोस्ट कांग्रेस के लीडर हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी को झंडा फहराना चाहिए था. पर नहीं, उन्होंने इस बात का भरोसा भी नहीं किया. उनके ऊपर झंडा फहराने के लिए वो चीयर लीडर, जैसे क्रिकेट में आजकल चौका लगाओ तो ताली बजाने वाले आ जाते हैं ग्रुप सा, उस किस्म के जो चीयर लीडर्स हैं, उन लोगों के लीडरों को आगे करते हैं ये लोग. तो उसका नतीजा भुगतना पड़ा है. आपने बात की राजस्थान में ये होगा वो होगा. राजस्थान और ये तो अभी दूर है साहब, 1.5 साल 2 साल लगेंगे इलेक्शन में. 3 महीने में 4 महीने में इलेक्शन हिमाचल प्रदेश के आने वाले हैं. आप मेरी बात आज एक नोट कर लीजिए, आपके माध्यम से देश के सभी जो दर्शक हैं आप लिख लें. जिस दिन हिमाचल प्रदेश इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के रिज़ल्ट आएंगे, दैट विल बी द लास्ट नेल. जैसे लाला लाजपत राय जी ने कहा था, मेरे सीने पे लगने वाली एक एक लाठी अंग्रेज़ राज के उसके अंदर आखिरी कील साबित होगी. तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक कील की तरह साबित होगी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सफाया होना.
मतलब 2024 तक पहुंचते पहुंचते तो कांग्रेस ऑपोजिशन में बैठने लायक भी नहीं रहेगी। आपका तो जो अनुमान है, एनालिसिस है, वो यही कह रहा है। बिल्कुल, मैं तथ्यों पे कह रहा हूँ साहब। मैं कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं दे रहा। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ना ही मैं, आप देखिए, ना ही को मैंने कोई तवीज़ या अंगूठियाँ पहन रखी हैं। परंतु राजनीति का जितना थोड़ा बहुत मेरे को अनुभव है, उसके चलते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्दर्न इंडिया, जिसको ये हिंदी बेल्ट बोलते हैं, हिंदी बेल्ट के अंदर ये आखिरी एक सूबा बचा है। पंजाब के कारनामे तो आपने देख लिए, एक जीता हुआ प्रांत इन 9 सिखियों की बदौलत, ये पैसा बटोरने वाले जिस किस्म के इंचार्ज बना के यहाँ पे इन्होंने भेज दिए, पैसे समेट समेट के, टिकटें बाँच के लोग जो राजस्थान चले गए, उन लोगों के चलते हुए कांग्रेस का हाल जो होगा वो तो होगा ही। और आप देखिएगा हिमाचल प्रदेश में क्या बनेगा। उन लोगों के बारे में G23 के लीडर से बात करके आप देखिए तो आपको बताएंगे कि किस किस्म के इंचार्जेस वहाँ पे लगा रखे हैं। उनके बारे में जो शब्द कांग्रेस के सीनियर लीडर बोलते हैं कांग्रेस मुख्यालय में, वो शायद यहाँ पे कहने लायक भी नहीं है। इवन जाखिर साहब, यू राइटली मेंशन कि कांग्रेस का पहला शासित राज्य था पंजाब, जिसने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और आप पीपीसीसी के प्रेसिडेंट थे। जाखिर साहब, मेरा सवाल ये है कि जब आप पीपीसीसी के प्रेसिडेंट थे, अनरेस्ट तो तब भी कांग्रेस में चल रहा था, कुछ ना कुछ हलचल हो रही थी। क्या आप लोगों ने ये बात सोनिया गांधी जी से बैठ के डिस्कस की, उनके साथ इस बारे में चर्चा हुई, या शी वॉज जस्ट अ म्यूट स्पेक्टेटर टू दिस एंटायर इशू? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस समय कोरोना के चलते हुए जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, जब कोरोना आया उसके बाद में मिसेस गांधी की तबीयत पहले नासाज थी, उसके बाद उनका मिलना जुलना बिल्कुल बंद समझ लिए। बहुत हद तक चंद गिने चुने लोग जिनके ज़रिए बातचीत होती थी, जिनमें एक हमारे वो थे जिनके लिए मैंने नाम लिए, जिन्होंने झंडा फहराया है, क्योंकि वो एक महिला होने के नाते उनसे पर्सनल तौर पे थे, और उन्होंने पंजाब के बारे में जो ब्रीफिंग उनको दी, नेचुरली उनकी जो इन्फॉर्मेशन वहीं तक सीमित थी। और बाकी जिनको इंचार्ज लगाया, चाहे कोई उत्तराखंड से आया, उनके बाद कोई राजस्थान से आया, उन्होंने अगर कोई बचा खुचा था तो उन्होंने वो समेट के काम रख दिया। तो इन लोगों के हाथ में कांग्रेस की लगाम चली गई, और वो आज ना तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को आ जाए, मैंने उसी दिन कह दिया मैं इन लोगों के, अगर ये इन लोगों को कहने से सुनील जाखड़ को नोटिस दिया जा सकता। साहब, सुनील तो ऐसे लोगों को लीडर मानता नहीं, आप इनको बड़े लीडर मानते हो, मैं तो इन लोगों को इनकी असलियत जानता हूँ। तो अपने आत्मसम्मान के लिए हट गया। आज उन्होंने भी कहा भाई, आई हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, आई हैव बीन इंसल्टेड बाय दिस बिहेवियर। सो उन्होंने आज उनकी अंतरात्मा की आवाज़ जागी है। मैंने, चाहे मैं जितना छोटा, मैं एक अदना सा आदमी हूँ, मैं कोई, ना ही मुझे किसी किस्म का घमंड है, ना ही कोई मुझे इस बात की है कि मैं कोई बहुत बड़ा लीडर था, परंतु मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान बहुत बड़ा था, और मैंने अपने चलते हुए अपना किनारा कर लिया इनसे। Jakhar sir, this is a proven fact that pick of Rahul Gandhi regarding the leaders is remain under the so many questions, and Charanjit Singh Channi is a perfect example. He has picked up Charanjit Singh Channi by brushing several senior leaders like you aside and appointed as a chief minister after Captain Amarinder Singh. But he has proven the Rahul Gandhi's choice wrong by losing the elections from 2 constituencies in Punjab. Whether he has proven Mr. Rahul Gandhi wrong or not, that's another point. But I think he has really done a great disservice to Punjabi identity by running away when Rahul Gandhi of the Congress party needs him, because he was promoted as a national asset which has been created by the Congress party. So where is the asset now when they need him most? आज जब पार्टी को ज़रूरत है अपने एक एक आदमी की, गुलाम नबी आज़ाद जैसे छोड़ के जा रहे हैं, युवा चेहरे, वो भी युवा चेहरों में गिना जा रहा था, वो भी राहुल जी के नज़दीकियों में गिने जा रहे थे, तो कहाँ हैं वो आज? क्यों नहीं आज वो एसेट सामने आ रहे, या एसेट इकट्ठे करके खुद मियाँ फाख्ता हो गए? सो माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आपकी कोई G23 लीडरशिप से या गुलाम नबी आज़ाद जी से कोई बातचीत हुई इस बारे में? अभी इस बारे में चर्चा हुई कोई? नहीं, मैंने तो आप मीडियम चैनल के मीडियम से देखा है, उनका जो पत्र मैंने कुछ अंश पढ़े हैं। भावना वही है साहब, आज आत्मसम्मान को लेके चापलूसों के इसके राज में चलते हुए मैं समझता हूँ, इसीलिए ये कोई मेरी भविष्यवाणी है, मैं कोई शराब नहीं दे रहा। कुछ लोग मुझ पर कहते हैं आप अपनी पुरानी 50 साल की पार्टी को शराब नहीं दे रहा साहब, मैं तो कोई कुछ भी नहीं, मैं तो एक विश्लेषण है मेरा कि इन हालातों को चलते हुए घर नहीं चलते साहब, घर नहीं चलते। आप नेशनल पार्टी चलाने की बात इस तरह बिना एक, जब तक धनी ना हो घर का, एक मुखिया ना हो घर का, घर नहीं चला करते।
Thank you, Jakhar sir, for speaking to Republic TV. So, in fact, Swesha, you can listen the entire truth of the Congress party from the former Congress leader who have served on a very authoritative post and remain in the touch of Gandhi family as well. And unrest has been started since years, and now the results of that unrest inside the Congress party is coming out. Yes.